especially from exam point of view, because we've not really talked about Microsoft Word yet. And it is, no matter how advanced the world becomes, word processing will always remain important. And किसी भी काम के लिए जो है ये इसकी importance रहेगी. Let us just see. और by the way, जो Google का version है, that's not very different from Microsoft's. So many things that are applicable here are also applicable there with very minor differences. So let's just have a look at interface first. And I've taken the liberty of adding up some text to it. अगर आप ये देखें तो इसमें यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट भी डाला हुआ है. तो अगर आप इसको देखो, और दिस इज द लेटेस्ट 365 वर्जन. तो अगर आप इसको देखो तो ये पार्ट जो है इट्स कॉल्ड द रिबन. यू कैन सी दैट देयर आर मेनी ऑप्शंस विद इन ईच रिबन. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शायद होम वाला है, बिकॉज होम के रिबन में जितनी भी इंपॉर्टेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन हैं या टूल्स हैं वो लिस्टेड है. So, by the way, your interface might look slightly different from mine, depending on which version of Microsoft Office you have. Anyway, इसके अलावा एक इसका बैकस्टेज वर्जन भी है. तो बैकस्टेज में जाने के लिए यू जस्ट क्लिक here and you'll see कि जितनी भी फाइलें मैंने पहले खोली हुई हैं वो मुझे नजर आ रही हैं. And by the way, if there is anything that somebody is working on, if there is something that you visit frequently, तो उसको आप पिन कर देते हो. ये एक छोटी सी पिन बनी हुई है. If I click here on this pin, it's always going to put it on front. It's just pinned up. अगर pinned ऑप्शन में जाऊं तो ये देखो pinned मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं. तो मैं जब भी ओपन करूंगा यहाँ से आसानी से ओपन करूंगा. Other than that, you've got templates, and no matter what sort of a document you want, all you have to do is just type in. तो अगर आप नेट से कनेक्टेड है तो you can sort of search for a particular template. Let me just see why. अच्छा, ये document यहाँ पे कर रहा है. Sorry, I have to click here. वो templates, and now अगर आप देखें नीचे से categories भी बनाई हुई. Their holidays, their resumes, education. I'll just click on resume, and there are many options available. All you have to do is just choose your favorite option. Let's just go for this one. I'm going to double click, और ये इसको डाउनलोड कर लेगा इसके डिजाइन को, and it will make it editable. So it's just taking its time because of the rather slow internet connectivity that I have at the moment. But eventually I think it will get there, or it won't, depending again on the speed of your internet connection. So there you go. It's still trying to download the stuff. It's not very heavy. अगर इंटरनेट आपके पास अच्छा है तो ये within seconds डाउनलोड हो जाना चाहिए. So the thing with templates is कि इसमें रेडीमेड सारा कुछ होता है. All you have to do is just fill in the blanks. Much like the stuff on Canva. I'm not exactly sure with Canva पे आपको कितना experience है. But nonetheless, इसमें आप सिर्फ जो ब्लैंक्स हैं मसलन ये है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, and of course I can sort of fill in these things, and within minutes my resume is, and it just looks reasonably good. It looks like a, of course it has been designed by a professional designer. ये within minutes जो है ना मैं इसको कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ. Anyway, I'm going to get rid of that for a moment because ये मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है इस वक्त रेज्यूमे बनाना. I don't want to save the changes. I'm going to exit out. यहाँ पे क्रॉस या एक्स पे जब मैं प्रेस करूंगा तो मैं एक्स आउट कर सकता हूँ, and I will come back to my screen, and let me just make sure that you can see the screen because कई बार फोन जो है ना ये मामलात थोड़े से
मुश्किल होते हैं। एनीवे ये एक डॉक्यूमेंट है तकरीबन 1300 का, एंड विद इन a few minutes I'm going to make it proper document, a proper readable document. I'm going to use all the various tools and options that I have here, and in the process आपको भी पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी अहम चीजें हैं इसमें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप एक दफा इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं पे आपने कहीं पे कोई हेडिंग तो नहीं डालनी। और ये तो मेरा टाइटल है, आई विल जस्ट यूज इट एज अ टाइटल। एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन के नाम से एक हेडिंग डालना चाह रहा हूँ। दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, एंड this is again a heading, etymology, and this is a subheading, या heading 2 भी इसको कह सकते हो आप। Then I've got heading here as well, here, and there are several other places where headings are to be found. So चीजें जो है वो ठीक लग रही है मुझे, और जो पहली चीज इसमें मैं करूँगा वो ये है कि I can decide the what the width is going to be. So you look up here and there's the ruler, right? This ruler actually is it's a very interesting way of controlling things. इसका margins और indentation दोनों ही control कर सकते हैं। For instance, if I just pull it across, and if I pull this little bar across, see how I'm able to maneuver my subheading. So इस तरह आप टैब जो डालते हो ना उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब टैब की जो डिस्टेंस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन। अगर मैं इतने डिस्टेंस पे टैब डालना चाह रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऊपर क्लिक किया, एंड नाउ व्हेनेवर आई प्रेस टैब इट गोस राइट टू दैट डिस्टेंस। तो दिस बिकम्स हेल्पफुल व्हेन यू आर एंटरिंग डेटा। किसी किस्म का आप डाटा एंटर कर रहे हो तो ये काम है। दिस इज समथिंग दैट यू नो should have should know about Microsoft Word. Other than that, ऊपर अगर आप देखें तो कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट है। Calibri for a fairly long time was the default font, and I believe it still is. अगर मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँ, कैलिब्री से पहले एरियल काफी मशहूर था, टाइम्स रोमन, और आई थिंक एकेडेमिया में यही ज्यादा जो फॉन्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल है। द थिंग विद कैलिब्री इज दैट इट्स मोर रीडेबल व्हेन इट कम्स टू टैब्स और लैपटॉप्स या डिजिटल डिवाइसेस। तो कॉमन नॉलेज यही है कि कैलिब्री का फॉन्ट जो है वो सबसे ज्यादा रीडेबल है। Now, if you want to increase the font और want to change the font, जैसे कि मैंने अभी कैलिब्री का किया है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। And if you want to change the size of the font, you can do that as well. Let's suppose I want the default to be 12 or 40 or 18. So I'm just playing with the font and you just want to see कि कौन सा बेहतर है। यही काम जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अगर आप देखें तो ये ऑप्शन यहाँ पर दी गई, या एक और आपको शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन वाला साइन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन द साइन विल इंक्रीज द फॉन्ट, एंड कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके अगर आप लेसर देन करेंगे तो वो उसको डिक्रीज करेगा। बट वी आल्सो गॉट ऑप्शंस हियर दैट डू द सेम। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे बाई 2 पॉइंट इसको बढ़ा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 पॉइंट्स कम कर रहा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना वो है इसमें नंबरिंग बुलेट्स एंड लिस्ट दैट यू मस्ट नो ऑफ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई बॉट द फॉलोइंग फ्रूट्स, एंड मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ कुछ फ्रूट्स के नाम, एप्पल्स, मैंगोस,
स्ट्रॉबेरीज। सो अब हो सकता है कि आप ये चाहें कि ये जो तीन नाम है इनको इनके साथ कुछ नंबरिंग हो जाए, ये बुलेट्स लग जाए। तो वन थिंग दैट यू हैव नोटिस्ड, मस्ट हैव नोटिस, कि जैसे मैंने इसको ऐसे हाईलाइट किया है तो एक बॉक्स ऊपर खुल गया। नाउ अगर आप चाहें तो इस बॉक्स को हमेशा की तरह हमेशा के लिए ऑफ भी कर सकते हैं फ्रॉम द सेटिंग्स, बट एक्चुअली ये काफी बेनिफिशियल है। बट ऑफ कोर्स सम पीपल फाइंड इट रादर annoying, सो इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल, सो आप ऑप्शंस में जाके इसको खत्म कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स एक्चुअली rather easy to do stuff from here rather than here. So जैसे ही मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करके तो खैर मैं सिर्फ माउस पे होवर करूंगा तो ये आ जाएगा, मगर अगर एक बार चला गया है तो अब मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा एंड इट विल रीअपियर। सो यू कैन डू प्लेंटी ऑफ स्टफ हियर, लाइक अलाइनिंग, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग की मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, मगर द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू हियर इज एड अप सब बुलेट्स। अगर आप देखें तो ये ऑप्शन है यहाँ पे, दीज आर द बुलेट्स एंड दीज आर द नंबर्स, you can use any of them, and the same options are present up here. ये देखो, यहाँ पे आप इसके बुलेट्स अपनी मर्जी के डाल सकते हो, आमतौर पे ये बुलेट्स चलते हैं। एंड इफ यू बिलीव दैट नंबर्स इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, तो ये देखो ये नंबर्स भी आए, राइट। तो ये आप चाहे तो इंडियन फॉर्म में नंबरिंग कर लें, चाहे तो रोमन में कर लें, इट्स रियली अप टू यू कि आप चीजों को कैसे दिखाना चाह रहे हैं। बट दिस वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और वो ये है कि अगर नंबरिंग करनी तो कैसे करनी, मगर एप्पल्स के बाद आप इसी के अंदर आप एप्पल्स की कैटेगरी में कुछ करना चाह रहे हैं तो सी एज अ हॉय, प्रेस टैब, और ये अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ रेड एप्पल्स एंड बी ग्रीन एप्पल्स, दैट्स इट। और अगर ग्रीन एप्पल्स की भी कोई किस्म है तो मजीद एंटर करके मैं दोबारा टैब दबाऊंगा, आई गो इन साइड इट अगेन एंड आई से ऑस्ट्रेलियन green apples and Royal English apples. Price लिख दिया मैंने, apples. So if you make a mistake, you can always undo stuff. Undo के लिए आपके पास एक क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी चीजें हैं, यहाँ से भी undo हो सकता है, but I think it's more beneficial to know the command. Command is Control and Z. Control दबा के आप Z या Z जैसे जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वो करोगे तो you'll go one step behind. इसी तरह कंट्रोल वाई रीडू करते हैं, मतलब मैं कंट्रोल जी दोबारा हूं ना, ये देखो, तो सी हाउ इट इज गोइंग वन स्टेप बैक। अगर यहां से मैं दोबारा अगले स्टेप में जाना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल वाई प्रेस करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आ गया इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू नंबर थिंग्स। इसी तरीके से आपके पास कुछ ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं विच आर वर्थ डिस्कसिंग। अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसको इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, आई हैव गॉट ऑप्शंस हियर व्हिच वुड हेल्प मी डू दैट। अलाइन, इसको कहते हैं अलाइनमेंट ऑप्शंस। सी हाउ इट टेक्स ऑल द टेक्स्ट एंड इट ट्राइज टू अलाइन इट। तो मेरे पास अलाइनमेंट की काफी ऑप्शन है, एक जो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली वो जस्टिफाई। जस्टिफाई इज गुड बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ goes through the entire text and it eliminates the stuff that's not needed. 20 मिनट बाद सिर्फ 15-20 मिनट, so that's what it does. तो ये जो है ना, अगर मैं चाहूँ तो पूरे टेक्स्ट को पकड़ के इसकी अलाइनमेंट में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई की और ऑप्शंस भी आ गई, पहले तो एक ही होती थी, जस्टिफाई लो, मीडियम एंड ऑफ कोर्स ये उसकी इंटेंसिटी है कि आप कितनी करना चाह रहे हैं। तो आई वुड प्रोबेबली यू नो just go for uh, the low one, और जो है ना जस्टिफिकेशन इसकी हो जाएगी। दूसरा ये कि कोई भी टेक्स्ट शुरू करने से पहले यू डिसाइड के उस टेक्स्ट में
कितनी स्पेसिंग होगी। स्पेसिंग इज के ये जो आपके अल्फाज हैं उनके दरमियान में कितना फासला है। तो व्हाई डज इट इवन मैटर? if you're using a screen, it might not matter as much because you've got stuff that allows you to zoom in like this. You've got tools that allow you to zoom in. And by the way, talking about zooming, बिल्कुल अगर मेरा माउस आप फॉलो करो तो नीचे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को जूम करवा सकते हैं. So instead of changing the font size, what you do is just pull this up or down, and all of a sudden things start to look just a little better, especially if your eyesight is not as good. ठीक है. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि ये अल्फाज के दरमियान में एक वक्फा है, इसको हम खुला कर सकते हैं. क्यों करना चाहेंगे? लाइन्स के दरमियान लाइन्स के दरमियान में भी वक्फा है, एंड समटाइम्स यू जस्ट वांट टू ब्रॉडन देम अप. सॉरी, देयर इज सम नॉइस. और वेट करना पड़ेगा. आई थिंक व्हाट आई शुड डू इज स्टॉप द वीडियो हियर और यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ी देर में.